Hello everyone. I believe I am audible to you guys, and very good evening for. And I'm really very excited to start our today agenda here. And today we are going to start our discussion with the most valuable topic, which is called the lookup function. Under lookup function, we are going to see what are the lookup function like VLOOKUP, HLOOKUP, and most powerful function, which is called the XLOOKUP function. After that, we are also going to deep dive into pivot table, which is going to like a very important topic for today. So before we begin, just confirm in a chat my voice and I am proper visual to you guys so that we can start. So I believe everything is going to like audible, and um, everyone are able to like see everything is like proper audible, right? So the class is going to in a both languages, like I explain first in English and again in Hindi. So if anyone like struggle in Hindi, so they can understand a topic um, in English, and who is like comfortable in Hindi, so they can grab the things in Hindi, right? So हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये क्लास करने वाले हैं. सबसे अच्छी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि जो कि आज का बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक होने वाला है, पावर पावर लाइक पाइवट टेबल एंड बी लुकअप फंक्शन, एक्स लुकअप एंड एच लुकअप, जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है. सो वंस आई गॉट द कंफर्मेशन, सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट. सो आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स गाइज. सो प्लीज़ confirm in the chat box so that we can start our agenda today. Okay, so I believe today is our match is also going on, so many people are engaged in math also. No issue at all. So let's get started with our agenda here. I am just going to turn off my video and start with the today agenda so that we are focused on our agenda which we are going to deep dive. So मैं अभी अपना जो है स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और जो है लॉन्च करते हैं एक्सेल टैब को, और वहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं कि क्या होता है लुकअप, और उसके बारे में हम बहुत ईजिली से समझ पाएंगे, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी हमने अभी तक प्रीवियसली पढ़ाया है. वन अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है ऑलरेडी. इफ़ एनी वन लाइक स्ट्रगल विद एनी टॉपिक, सो please let me know in the same WhatsApp group where we can conduct our doubt clear session and get resolved with our doubt. So my aim is to make you guys comfortable with the at least Excel basic understanding, so that you can work on the real data in a real life, right? So Excel is not going to to dead. It's going to like a useful for the industry level, because here you can see in the under data section, sorry, in the under formula section, it's also integrated with the Python also, right? So there are a lot of things is happening with the data, with the Excel, so it's not going to like a die. And here a lot of automation option also available here, right? So don't worry about that. Let's jump in our today's agenda, and our agenda is going to a lookup function. So lookup function is actually very useful, right? So under the lookup function, we are going to see, as I have mentioned in the starting, we are going to start with the lookup. Under lookup, we are going to see VLOOKUP, HLOOKUP, and XLOOKUP. We are under the lookup function, we are going to see the so before we start, let's talk about the what are the lookup function. What is lookup concept actually? So suppose um, lookup is useful like our data is available on the different sheets, and we need to bring in the one sheet from another sheet. So in this case we use the VLOOKUP function. like हमारा डेटा एक सेल्स टेबल में पड़ा हुआ है और मास्टर डेटा से हमें कुछ और डेटा लेके आना है. इस केस में हम जो है लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं. मतलब एक टेबल से कोई वैल्यू उठाना हो, दूसरे टेबल में लेके आना हो, राइट? सो वी हैव टू पुट द पिक द डेटा फ्रॉम द अनदर टेबल and the based on the some data, and we need to find out data that it's going to like a work just like a join in a in a SQL. So right. So why mhm. So what is lookup, and why we need lookup function? So why we need lookup function? So if
we talk about why we need lookup function. So lookup function is going to very needful, like when we are doing like these kind of the things which I have already explained to you guys. So what are the lookup concept here? So uh, सो जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया कि लुकअप फंक्शन इससे मान लो एक हमारे पास ये डेटा है और यहाँ से कुछ डेटा इस कंडीशन के हिसाब से दूसरी जगह पर लेके आना है, इस बेस के लिए हम जो है लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। सो कि बहुत यूज़फुल होता है और इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप डेली यूज़ करेंगे अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि लुकअप फंक्शन क्या है। जैसे डिफरेंट सीट पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ से डेटा को लेके आना है फ्रॉम मास्टर सीट से लेके दूसरे सीट पे लेके आना है डेटा, तो इस केस में हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो वाई नॉट बी यूज मैनुअल कॉपी? सपोज वी हैव दिस डेटा लाइक दिस एंड many people are saying that we can just like go here if I want to find out the order date. So many people are saying that hey, just go and copy that column and paste it over here, but this is not going to like a proper way, because there are a lot of mistakes can be happen, because the it's a statics way, right? If anything going to change, it's going to change, right? If suppose if our data is used in this case also, we are not going to like perform this way, right? So why not use manual copy? Because it's a waste of our time and it's a prone to mistake, not scalable, like. So when we are use lookup function actually, so lookup function is going to like a automatically update that value, and it's also improve our accuracy, and for professional reporting we also use this, right? So you can understand like a manual copy students work, and the lookup equals like a real data analyst work, right? So you can relate like this. So this is the way we are going to use. So we are not going to like use the copy. So अगर अभी तक आप लोग कॉपी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको अभी से आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप क्या करता है? इट्स लुक द वैल्यू फ्रॉम द वर्टिकली, राइट। 1 minute please, let me open our data first. So till here, if my voice and everything is clear to you guys, just let me know so that we can start. Okay, I believe everything is visible to you, and please wait a minute. I just going to start. Okay, no problem here. So suppose we have many kind of the lookup function which is we are going to use. First we are going to use VLOOKUP for vertical lookup function. We are going to use VLOOKUP, HLOOKUP, and most powerful function which is going to use for the XLOOKUP, right? So we look up for vertical, X look up for horizontal, and X look up for any kind of the data. We can find out data from up and down, right and left, from anywhere, right? So in this case we are going to use our lookup function here. So without talking about the much of theoretical part, just we jump our data which I have already shared in the static class. So you can guys use that same data here, and if anyone have the problem with the data, so please let me know so that we can like I can paste that data, right? So many people are saying everything is going to visual and everything is going to like audible to you guys, right? So before we begin with like a deep dive our VLOOKUP function, I just want to make you sure guys what are the data we are going to pick up here. So I have created this data by using the Pizza Sales data which I have shared yesterday in the class. So I believe you guys are able to find the data and use the data here, right? So अभी ये डेटा से हम जो है कुछ इस तरीके से डेटा होगा, वहाँ से हमने कुछ कॉलम को पिकअप किया है इस तरीके से, और आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, कुछ कैटेगरी में लेता हूँ। सपोज मैं ऑर्डर आईडी को कॉपी करता हूँ इस तरीके से मैं इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करता हूँ, जो कि
जो कि इस तरीके से मैं अपने डेटा को बनाता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस पर हम लोग अपना VLOOKUP फंक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आई हैव फोकस्ड ऑन द मच पार्ट ऑन द लाइक अ प्रैक्टिकल पार्ट, not the only theoretical part. Suppose we want to hear pizza category. Suppose here we have order details in and here, and here we want pizza category based on the order details ID, right? So order details ID contain here and pizza category. Sorry, order detail ID in A1 column, and here have pizza category in C, right? So I believe everyone able to find out this and able to make this data. If not, please let me know. I can wait और वी कैन स्टार्ट। सो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है और हमको पिज़्ज़ा कैटेगरी लेके आना है। एक हार्ड वे है कि हम यहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कॉपी एंड हेयर, यहाँ से लाके ऐसे हम पेस्ट कर सकते हैं मैनुअल वे। लेकिन क्या होगा कि इसमें पेस्ट करने में क्या होगा, इस तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेस्ट करने में क्या होगा, मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है और बेस्ड ऑन सम कंडीशन ये डेटा चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप जो है चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक्स पड़ा रहेगा, जिससे कि यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिकमेंडेड वे टू लाइक पिकअप डेटा फ्रॉम द अनदर सीट और बेस्ड ऑन सम कंडीशन। So for that purpose we are going to use our lookup function here, right? So when we are going to use the lookup function, we are firstly we need to like understand what the lookup and what are the syntax here. So when I type here lookup, so here you can see clearly lookup table and table array, and if everything is visible to you guys, please confirm and type clear in the chat so that we can move further. So here, okay, I think yeah, it's a visible now, yeah. Okay, so here you can see lookup value and the table array and the column index number and the range lookup, right? So we are going to use this here, how what are the meaning of these as well. So here you can see lookup, it's ask for the lookup value, so lookup value is going to our order ID here, and for table array we are going to select this table from here to here, from here with here pizza category, and just control shift down array and F4 to freeze the column, and for column index it's going to third column 1 2 3, and we are just going to type here column index number is 3, and here one more thing is that true for the approximate match and false for the exact match. We need our data in exact, so we type here 0, and when we are just going to enter here, so it should be here, but C1 A1 C2 P1 L2 VLOOKUP. It's not going to give me any data. Let me check. Yeah, it's going to give me data. Like when you apply the this function, this is called the VLOOKUP function, simple VLOOKUP function. When you apply, so you are able to get this data here without any problem at all here, right? So this is the function actually we used here, lookup function। हमने lookup function का यूज़ किया, जिसके अंदर बोलता है कि lookup वैल्यू क्या है। lookup वैल्यू हमारा ऑर्डर आईडी है, बोलता है टेबल एरे क्या है, टेबल एरे हमारा ये है, कहाँ से डेटा लेके आना है, यहाँ से लाना है, क्या लेके आना है, 3 नंबर का डेटा लेके आना है पिज़्ज़ा कैटेगरी, और किस कंडीशन पे लेके आना है, अप्रोक्सीमेट चाहिए या फिर आपको एग्जैक्ट चाहिए। तो हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो हमने 0 यहाँ पर लिखा, आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वे वी यूज़ द VLOOKUP फंक्शन। अदरवाइज वी कैन यूज़ here VLOOKUP function, but here are one limitation with the VLOOKUP function. Suppose we have suppose this data like this. Sometimes suppose we have data like this. I'm just going to copy and paste in the value formats so that we can move for next agenda hour. So here suppose we have data like this,
and just do and control C for copy, and I just want to paste it here, control B, and I just want to make this from here to here, control shift plus, like this, and I'm going to delete this. Okay, so suppose we have data like this, order ID in the right side and pizza category in the left side. Here it's in the right side, so we are able to find out the pizza category here. But what if the data is present in the left side? When we are trying to here apply for the VLOOKUP function, so when I am going to apply, it's going to lookup value is the same, and our table array is this, and here you can see the column index number is going to 2, and we need exact data match. So when we hit the enter, here you can see nothing is here, right? Because here it's give us the NA error, because the limitation of the VLOOKUP function never work on the left side of the data. VLOOKUP function are not able to like find out the data from the left side. So that purpose actually we are not able to directly use VLOOKUP here. So that purpose we have one most powerful function which is called the XLOOKUP function. सो यहाँ पे जो है जब हमारा डेटा कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा लुकअप वैल्यू जो है राइट में हो, और जो हमारा जिसको हम लेना चाहते हैं वो हमारा लेफ़्ट में हो, तो इस केस में हमारा लुकअप जो है फेल हो जाता है वी लुकअप, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं एक्स लुकअप। यहाँ का इसका सॉल्यूशन होगा एक्स लुकअप। आई लेट यू नो। सो एक्स लुकअप क्या करता है, एक्स लुकअप राइट हो डेटा, लेफ़्ट हो डेटा, अपर हो या डाउन हो, कहीं से भी डेटा को लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। तो आई बिलीव आप लोग को समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। okay, so again one more type of the lookup here which is called the like h lookup. So h lookup is going to like a same, but it's so useful for the horizontal data like this. Suppose we have data pizza category, and when I'm going to paste it in a horizontal in the transpose like this, we have this data, we have the pizza category classic and the order details one like this. Suppose we have this data, and based on this data I want to find out the classic data here. So in this case, not the classic data, suppose we have data like this. सो अगर इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे हमको एच लुकअप लगाना है, हमको क्लासिक का लेके आना है, ऑर्डर आईडी का डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो इस तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल के लिए हम जब यूज़ करते हैं एच लुकअप फंक्शन को, एच लुकअप, तो इसका सेंटेक्स भी सेम होता है, जस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल होता है। ये बोलता है लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू सपोज हमारा ये क्लासिक हो जाएगा, ठीक है, और क्लासिक होगा lookup value, and for table array we are going to select this like this, and for column index number it's going to 2, and for message everything is going to like this, and when we enter here we are able to find out the value. So HLOOKUP is useful for the horizontal and VLOOKUP is used for the vertical. These are major different, and mainly our data is present in like a vertical form, so we are not use that much of HLOOKUP function, and the HLOOKUP function is not that much popular also. So HLOOKUP क्या होता है, वो horizontal lookup के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पावरफुल फंक्शन, जो कि हम बोलते हैं
XLOOKUP function. Now we move to powerful function which is called the XLOOKUP function. So what are the XLOOKUP function actually? So when I type here, so XLOOKUP function is a very powerful and mostly useful, right? We mostly use only XLOOKUP. By using the XLOOKUP we can solve any kind of the problem of the data, like we can pick up data from the left, right, 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 up and down side. From any kind of the data we are able to find out by using the XLOOKUP function. So this is going to like a very powerful function. That's why I'm saying it's a very powerful function. And XLOOKUP सब तरफ काम करता है, लाइक बी लुकअप और एक्स लुकअप दो फंक्शन अभी तक हम यूज कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स लुकअप की अगर हम सिंटैक्स की बात करें, जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू करके एक्स लुकअप करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये बोलता है लुकअप वैल्यू जो कि सबका सेम है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ से कहानी बदल जाती है, बोलता है लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे इफ़ नॉट फाउंड मैच मोड एंड सर्च मोड। So there are a lot of other option, extra option also available here. So we can see step by step. So this is the syntax you can see here. So right, so I believe everyone are able to see all the things here, and I am able to make you guys um, um, clear all the things. So right, so let's move with one example our. So suppose we have this the same data, and here we want to find out the again pizza category. Here we want to find out the again pizza category, but this time we are going to use our XLOOKUP function. We are gonna type here XLOOKUP function, so you can see clearly it's ask for the lookup value. So lookup value is going to our order details ID, and for table array we are just going to copy the table lookup array. It's asked for the lookup array, so we are going to just select our lookup table, which is our order detail ID, and again is it's asked for the a return array, what you want to return here. So we want to return pizza category here, so just select this and press F4 one time, and here you can see if not found option also available. So that option is not available from the VLOOKUP side. For that purpose we are going to use one other function that is called the error handling function, if error. So that problem is also solved here, so we will see how. And as of now I'm just going to skip this, and match mode is also we are going to use the same exact match, and here we are just going to close, and when we hit the enter, here you can see clearly we are able to find out the same data, right? So here you can see by using the VLOOKUP function, when we are by using the XLOOKUP function, we are getting the same result in the same very easiest way, right? So XLOOKUP का यूज़ करके भी हम सेम रिजल्ट को बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके से हमने XLOOKUP का यूज़ कर लिया, VLOOKUP का यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको जब हम XLOOKUP यहाँ पे जब हम यूज़ किए VLOOKUP और वो डेटा नहीं मिला, तो ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम XLOOKUP यूज़ करते हैं तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इफ एरर। व्हेन वी यूज द इफ एरर हेयर, सो इट्स आस्क फॉर द वैल्यू व्हाट यू वांट टू रिटर्न इफ एनी डेटा इज हेयर error. So I want to return 0 here, so here you can see it's clearly handle the data like this. It's already format in a date format, so I'm just going to format this in a number format. So here you can see it's a 0 now, right? Otherwise you can type anything over here, like I want to a like this. When I enter here, you can see for error value I have typed the triple one here. But when we are going to use the lookup XLOOKUP function here, in this case
when we are going to use XLOOKUP function for this case. So we just need to here we just need to add anything like this. If found error, so I just want triple a here, 4 time a here, like this, and match is exact match, comma. Here you can see also there are a lot of options available, like a search mode, in which order you want to search, like in ascending order, in a descending order, in a first to last and second to last, like this. There are a lot of एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल है, राइट. सो एक्सलुकअप को यूज़ करके आप जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. डेटा को हॉरिजेंटली हो, अप एंड डाउन सर्च करना हो, फिर राइट से लेफ्ट सर्च करना हो, सारी तरीके का डेटा आप कर सकते हैं. यहाँ पे हमने इस तरीके से किया, ठीक है. और इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल जाके इंटर कर देता हूँ, ठीक है. अभी तक तो आप देख पा रहे हैं सब कुछ डेटा इस तरीके से है, सेम आ रहा है. लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ गया और इस डेटा को डिलीट कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत ही रिप्लेस कर दे रहा है 4 टाइम ए से, ठीक है. सो दिस इज द पर्पज वी यूज XLOOKUP फंक्शन वाइडली इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स गोइंग टू टाइम सेवर. बाय यूजिंग द वन सिंगल फॉर्मूला वी आर एबल टू do the lot of the calculation, lot of the analysis, a lot of the things by using the one single formula, which is called the XLOOKUP function. That is very useful function in uh, uh, today's data field, right. So suppose we have this data like this, and before we see, when we are going to use VLOOKUP function, it's not going to give us the data from the left side, right, because VLOOKUP limitation is it's search data from the right side only. तो वी क्या करता है, राइट साइड के डेटा को ही ओनली सर्च करता है. तो उस लिमिटेशन को भी दूर XLOOKUP के थ्रू कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. जैसे हम XLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं, ये बोलता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम इसको लेते हैं, ऑर्डर डिटेल्स आईडी को, और यहाँ जाके लुकअप एरे के अंदर, इसके अंदर हम ढूंढना चाहते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ से जाके इसको हम F4 से फिक्स कर देते हैं. उसके बाद यहाँ जाते हैं, पिज़्ज़ा कैटेगरी को हम रिटर्न में लेके आना चाहते हैं, इसको गए, और यहाँ से जाके इसको भी हम जो है F4 करके फ्रीज कर देते हैं, और 0 चाहते हैं अगर कोई एरर आता है, अदरवाइज हम उस वैल्यू को एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, राइट दिस. एंड व्हेन आई हिट द इंटर एंड here's the value in the lower side, we are getting error here. Let me check why we are getting error here. So use even XLOOKUP S2. Let's apply the same formula again, XLOOKUP, and the lookup value is also need to freeze, and the lookup array is this. Lookup array is from here to here, F4 to freeze the data, and here we should need to copy all, select all the data, and again press the F4. For error I want 0 and I want exact match only, so just close the brackets and hit the enter. When I hit the enter and drag this data, it's going to give me the spell error here. So why it's here, L2, XLOOKUP. Let's type again, and lookup value is this, and our table lookup array is this one, and I want to look up this value, I want to return this value. Okay, I think with some range issue here previously, so that it's not working. So for 0 close, hit the enter. Again just drag this data here, we are able to find out data. Because of the some range issue we are not able to find out this previously.
बट नाउ वी फिक्स डेट। सो कुछ रेंज का इशू था, उसकी वजह से नहीं आ रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेम फार्मूला हमने लगाया था पहले भी। तो ये इस तरीके से कुछ लॉजिक होता है एक्स लुकअप का, जो कि राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, कहीं से भी हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली हो, सारे तरीके के डेटा को फेच करने के लिए हम एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज होता है। I believe I am able to make you guys understand what are the lookup function, under lookup function, how we use VLOOKUP function, as lookup and XLOOKUP function. If everything going to clear to you guys, just comment as in the chat box so that we can proceed further. And I believe it's going to like understandable to you guys, right? So we compare with the other function, lookup function, like VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP. So it's a function going to like a use, it's going to like a become the old, but we also use sometime. But we can solve any kind of the problem which can solve by using the VLOOKUP and XLOOKUP by just using the one single function which is called the XLOOKUP function, right? So XLOOKUP is very rare we are using the XLOOKUP, and it's a industry standard, and we use very widely here, right? So I believe I am able to make you guys understand what are the lookup function and why we use lookup function. Like we have data from the different table, for from that we need to like find out some related table information in some specific conditions, so that in that purpose we are going to use a lookup function. The lookup function we also see what are the lookup, VLOOKUP, and XLOOKUP function, right? So I believe everything clear, and I just want to move on the next topic, which is called the pivot table. So pivot table is actually very useful topic, as you guys know. So pivot table पे हम मूव करेंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होता है एज ए डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो पाइवट टेबल के अंदर हम देखेंगे कि पाइवट टेबल क्या होता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, व्हाट आर द पाइवट टेबल, वाई वी यूज़, एंड लाइक it's a useful or not, like right this. So suppose we want to summarize our data. So pivot table have to summarize our data, to summarize data. We use power pivot, and drop and drag and drop reporting, reporting for dashboard. We use pivot table, like for every data analyst should use on every day, right? Pivot table when they are interacting with the data. So ये बहुत ही यूज़फुल होता है. Why pivot table is important? Because the fast reporting and no complex formula. You should not even need to like enter any formula, and you are able to like summarize and make the dashboard without using even single formula here, right? By using a single thing which is called the pivot table, like, and answer the business questions easily by using the pivot table, right? So I think I'm able to make you guys understand what are the pivot table, and why we use. So we use our pivot table to save our time, and summarize our data. Drag and drop option available here. Suppose we have this data set here, you can see this is the data set. If by seeing this data, anyone ask you what are the like which pizza sells most, and which category get more revenue, and which size is popular, so you are not able to like find out that by seeing the just raw data, because it's a also the just a chunk of data, but you are not able to find out that, right? So for that purpose we are going to use पाइवेट टेबल. तो इस डेटा से आप देख के ईजिली नहीं बता सकते हैं किसकी सेल ज़्यादा चल रही है, कौन सी कैटेगरी जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या फिर विच साइज इज़ पॉपुलर. आप इसको देख के ही जस्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है. सो फॉर डैट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज आवर
पाइवेट टेबल। सो पाइवेट टेबल एक्चुअली लगाते कैसे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कुछ डेटा है, अगर आप डेटा की बात करें, यहाँ डाउन एरो कर आओगे तो 48,621 डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। और कॉलम भी कुछ इस तरीके से बहुत सारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो इसको देख के ईजिली आप कुछ यहाँ से कोई इंसाइट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग द पाइवेट टेबल ऑप्शन यू आर एबल टू फाइंड आउट द सम information from our data. So कैसे लगाते हैं, so for that purpose how to apply the pivot table, so for that you should just need to go in the insert tab, and the insert here you can see one option which is called the pivot table, and another one is called the recommended pivot table. So you can use the pivot table option here from here, and once you click on the pivot table option here you can see there are a lot of options available, like for the select the table or the range. So we have already selected this range, and use an external data source. If there are any external data source also available, we can use that like this, but for that purpose we need to do the connection. So that's why I'm saying that Excel is going to like a very useful function, right. So here we want to like another option here available, like choose where to place the pivot table. So we want to like in a new worksheet or existing worksheet. Suppose I want on new worksheet, so just like that you just need to keep it as it, otherwise if you want in the same worksheet, so you just need to give the some location like this here. And once you click here, so here you can see it's a working here. So here you can see pivot option. Under this option here you are able to see the all the header here, and here you can see one option is called the filter option, second one is called the column option, and row and value. We will see how exactly it's behave, like right. So यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो जब एग्जिस्टिंग सीट का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इस तरीके से सेम सीट पे हम जब जो भी लोकेशन दिया वहाँ पे एक पाइवेट टेबल का ऑप्शन मिल गया। बाय यूजिंग दैट पाइवेट टेबल यू आर एबल टू लाइक एनालाइज योर डेटा, राइट। सो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हमारी वॉइस आपको अच्छे से कंफर्म क्लियर आ रही है और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट। सो हेयर यू कैन सी वन मोर थिंग, लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको फिल्टर का, कॉलम का और वैल्यू का, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे फील्ड एंड आइटम का आ जाएगा, जो कि एडवांस टॉपिक के अंदर हम देख रहे होंगे। पाइवेट चार्ट का एक ऑप्शन, इस तरीके से बहुत सारा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। स्लाइसर का आता है, टाइमलाइन का आता है। तो ये सब कुछ हम देख रहे होंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे एक्सेल का, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फर्स्ट बिजनेस क्वेश्चन था, और सेकंड ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, एक बार दोबारा से अप्लाई करते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द सेकंड टाइम। So once you click all the data, just go into insert tab, and the insert tab you just need to select this option which is called the pivot table option. Once you click here, now this time I want to use the new worksheet here, right. So by using the new worksheet as well, you are able to apply the pivot table here. In this case you are able to see that we are jump in the newly page, right. So by using this function you are able to jump on the new page as well, right. सो भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हमने न्यू पेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हम बहुत इजीली जो है न्यू पेज पे जंप हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ बिजनेस केस सॉल्व कर लेते हैं विद पिज्ज़ा डेटा सेट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो मैं बिलीव करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि डेटा क्या है, और डेटा को आपने देखा होगा अच्छे से। तो सपोज हमारे पास एक बिजनेस केस आता है कि सेल्स बाई business team want to know what are the sales by category wise sales by category wise. Business team want to know what are the sales by category wise. So for that purpose we are just going to use our pivot table. When we are going to like use the formula, so it's going to very like a critical work, but by just using the drag and drop we are able to perform the same thing. For that purpose we are just going to use the total price here in the just value option,
and we want sales by category. So category, here you can also search pizza category side. I want to in the raw option like this. If we want to present our data like this, so we can use pizza category in the raw option. Otherwise we can use this in the column option also here. So for that, it's a depend our requirement. So but I want to use it by in raw option. So here you can see it's a clearly visible all the pizza category here and the total price of the pizza category wise, right? So by using this function we are able to solve our first business case. So आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमने जो है हमारे पास एक केस आया कि सेल्स बाय कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी बाय सेल्स निकालना था। उस केस में हमने क्या किया, कैटेगरी को लिया और उसको हमने रॉ में रख दिया और प्राइस को हमने वैल्यू ऑप्शन में रखा। यहाँ वैल्यू ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे once you click over here, so you can see there are a lot of other options available like this: sum, count, average, max, mean, product. Once you click on the count, it's give you the count, and again you just need to drag this price here. I just want to like build some report without using single formula, so that you guys can understand. Here I'm able to like find out the total count, and if I want to like find out total sum here, and suppose I want to find out the maximum here, and I want to find out some minimum value here. So we can use the minimum option. We can use when the one value also called the average option also available. Otherwise you can here see there are a lot of other option available like this. In the show value option, here you can see under the calculation option, here you can see total, running total also here like this. Once you click, and the running total I want to by the pizza category wise. Once you go and like apply the running total formula, so it's going to like some tricky, but by using the simple drag and drop option you are able to perform the lot of कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड, राइट? सो मैं बिलीव करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी तरीके से कुछ सिंपल से चीज़ों को परफॉर्म करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अपने फर्स्ट बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो बिल्कुल समराइज वे में आपको डेटा मिल जा रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि पिज़्ज़ा कैटेगरी चिकन के अंदर इतना प्राइस का डेटा, इतना सोल्ड हुआ है, काउंट इतना हुआ था, और उसके अंदर इतना प्राइस का सोल्ड हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर इतना था, मिनिमम इतना था, सम ऑफ प्राइस, रनिंग टोटल आप दे सकते हैं, जो कि ट्रेंड वाइज एनालिसिस के लिए हमें बहुत यूजफुल होता है, राइट? सो आई बिलीव आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सपोज नाउ आई वांट टू नो टॉप सेलिंग पिज्ज़ा। सेकेंड क्वेश्चन इज a top selling pizza. Top selling pizza. For that purpose we are also going to use top selling pizza. For that purpose we are also going to use the pivot table option. For that purpose you are just go even you can go for the same basic, go and select the data. Otherwise just go and select this pivot table and just paste it here, and this is the second way. And you can remove these value which are not we are going to use. So I want to top selling pizza with, so in this case I want to sum of quantity. 1 minute please, just I want to remove this. Move to end, remove this field, again remove this field. By using this you can remove, you can here from here you can also remove. I want to remove all the field from here, and our business goal is what? I want to find out the top selling pizza. So top selling pizza is what? For that purpose we need to like sort out our data as well, right? So here you can see
pizza name here. I just want to replace pizza category with a pizza name. So pizza name is here. So we just need to drag in the row column, and for top selling pizza I want to quantity column here. So quantity here, just copy, just drag, and just drag in the value section, and here you can see, and here from here you just need to like sort this largest to smallest. So here you can see these are the top selling pizza, right? This is the top selling pizza. First one are our top selling pizza. So by using the simple drag and drop option, we are able to find out the second business case, which is really very useful. and आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में हमने जो है इस दूसरे बिजनेस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला हम एक एनालिसिस और करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि साइज वाइज सेल्स क्या हुआ है। कि अगर मान लो हम चाहते हैं कि साइज वाइज सेल्स क्या हुआ है, तो जस्ट पेस्ट इट, just copy and paste it down, and I want to third problem is what is the size wise sale. So I have built this class in the way like it's going to like a proper uh, exercise which real data analysts do in the real life, right? So for that purpose I use the real sales data, so that you guys can understand and relate the same thing in a practical way, because by using the chat gpt and other things you are able to find out the idea. But by using by develop if you want to like develop the thought process of how a data analyst work in a real time, so that purpose I have built this course in a that way, right? So I believe you guys are able to relate all the things, right? So third problem was size wise sale. I want to size wise sale. So here I want to for filter raw option, just comment. I think you guys are able to find out the problem now. So I want just size here. So page size wise sales. So page size wise sales you can see here, these are the page size wise sales. Here you can see the large size is sells the most, right? So the contribution of the large size of the pizza is high, right? सो इस तरीके से आप जो है थर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लार्ज साइज़ का जो पिज़्ज़ा है उसका सेल सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो डेट वाइज सेल आप करना चाहते हैं तो डेट वाइज सेल भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज एक और बिजनेस प्रॉब्लम है हमारे पास कि डेट वाइज सेल्स निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल सा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ से पिज़्ज़ा साइज को हटाएंगे इस तरीके से। तो आप ड्रैग आउट कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से जाके आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो डेट कॉलम इज हियर, ऑर्डर टाइम और ऑर्डर डेट। we need to order date wise sale. So here you can see there are a lot of option available. So we just want to make sure to remove this and also remove this, so it's going to useful, right? So that it's going to sum of quantity, no, okay. So here you can see clearly, here are the, in this way we are able to find out the date wise sale as well, right? So sorry, month wise sale as well. So if you want to date wise, just go remove all the things from here and just apply filter and select. So there are no date available actually, so I think there are, this is the date by level by value. So month column available, so by using the month column you are able to find out your sales by month wise, right? So
So there are a lot of option available. Apart from this, agar you if you want to like apply some filter, suppose I want to find out one more problem, like I want to find out the what are the sales by the size wise, and the which pizza category sales is like a size wise pizza category sale. So for that purpose we use the category option also in a filter option. From here we can filter out, like we are interested in a classic only, so we can just click here. We are interested in a chicken and classic, we can click here like this. It's going to change, right? You notice the value is going to change. So I believe it's going to understandable to you guys, and from like this. And if you want to uh, separate the value in the column wise as well, so just need to drag here, and here you can see it's a proper reports, and it's a very good report actually. So from you, by using this report, you are able to explain the business problem as well, right? So here you can see clearly the large pizza size has a large pizza size with the category wise sale, like with the kitchen chicken, classic, supreme, and veggie type of the sale. So which are category wise and which size where the sale we want to see in this way, so we are able to find out the that business problem as well, right? So आई बिलीव आई एम एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, किस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि फ़िल्टर का यूज कैसे करते हैं प्राइवेट टेबल के अंदर, ठीक है। उसके साथ हमने देखा कि अगर मान लो हमको कॉलम के अंदर जो है यूज़ करना था ये आपका पिज़्ज़ा कैटेगरी को, तो उसको हमने यूज़ कर लिया। और रॉ के अंदर हमने पिज़्ज़ा साइज को यूज़ किया, सम ऑफ क्वांटिटी को हमने यूज़ कर लिया इन वैल्यू ऑप्शन। तो हमने ये भी देखा कि वैल्यू के ऑप्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट calculation we can perform, like a sum, count, max, mean, average, and standard deviation, and many more things we can do, like a percentage and many more things you can go with each and each and option. So we can if you guys like struggle with any option, so just let me know in the like in our group, so we can discuss if there are any challenges from your side, right? So I believe I am able to make you guys understand, and everything is visible to you, and everything is like a understandable for you, right? So in the next class we are going to see how to make a dynamic report by using the pivot table and some functions. And we also going to deep dive with some advanced thing which is called slicer timeline. And here you can see in the insert tab there are a lot of the charts and graphs. We are going to we are going to mm, we are just going to find out we are just going to create our final project for data analyst by using the excel, right? So it's going to proper approx 1.5 hour class. We are going to live, and we do create our end-to-end project by using the some functionalities of excel, and that you can also mention in your project as well, right? So I think I am able to make you understand, and till then please do practice. I have shared the uh, that notes. I'm just going to share that notes in the group, WhatsApp group, so from there you can use that. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ जिसमें हम क्रिएट करेंगे एंड टू एंड अपना एक जो है प्रोजेक्ट, जिस पे बाय यूजिंग द दिस सेम डेटा पिज्जा सेल्स डेटा, अदरवाइज एनी अदर सेल्स डेटा. So I'll let you know guys what the data set we are going to use for that purpose. So don't worry about that, and I think I am able to make you guys understand, and everything is visible to you. So let's meet in upcoming Saturday, and till then thank you very much. If there are any problem, please um, reach out to me in the group section, so we can solve in our doubt clear session, right? Thank you very much. Let's meet in the next session.